balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह घाटी. What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the 3-feet devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik S.P. Bangu and signalman Sanket making a world record for the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. तैयार करते हुए सुमित कुमार यादव और 7 अन्य डेविल्स कर्तव्य पथ पर. So many brilliant formations. Mercury Peak, daring Mercury Peak formation formed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Chena and 12 daredevils. We can see them pushing the boundaries of endurance. डेविल्स एक-एक करके आगे पहुंचते हुए मर्क्यूरी पीक Going past the saluting base. Mercury Peak formation. Hours of practice, years of training coming to fruition today. इनको वॉरियर जो आधुनिक युग के तकनीकी वॉरियर्स, जोन ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार प्रवीण परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य डेविल्स. And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHN Durgesh Kumar, CQMX Sujit Bondal and 20 other daredevils. Stunning display, vividly recreates India's national flower, the Lotus. और ये ह्यूमन पिरामिड 33 मैन पिरामिड सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए कर्तव्य पथ पर जोश और रोमांच की नई परिभाषा लिखते हुए. Absolutely. Well, the exhilaration has just begun. And now it's time for our men in blue and the fly past. It's time for the grand finale. Dazzling fly past by the Indian Air Force. Soon you will witness aerobatics and professional mixed-air maneuvers by some of the most professional pilots. Fly past lined up today, comprising a total of 40 aircraft, 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopters. We also have 3 aircraft from the Indian Coast Guard and 1 aircraft of the Indian Navy in today's fly past. These aircraft are taken off from different air bases, flying all the way to Kartavya Path today and present an aerial salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. The first formation will be Ajay Formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for their unmatched power and lethality across the world. Shortly, 3 Apache helicopters will be flying in over the saluting dares in victory formation. जी हाँ, निगाहें आकाश की ओर है और वायु विचरण करते हुए, वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज कुछ ही पलों के पश्चात कर्तव्य पथ के ऊपर नजर आएंगे. निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं उत्कंठा के साथ और यकीनन भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम चरितार्थ होने की ओर अग्रसर. सबसे पहले हम देखेंगे अजय फॉर्मेशन को, जिसपे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे. उपस्थित जनसमूह रोमांचित है, आह्लादित है, उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा. And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sadathi. Flying the other 2 aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system, and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's lead into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see formation airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sadathi.
with Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर वनीत डोगरा, विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palan Air Base. AN-32, a strong, rugged airplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. तो डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्शवाद के समय पर सहायता। The Sutlej formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IF with the role of air calibration of the IF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypath, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। And now the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force. The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Gaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhoi is airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Gaur. एक के बाद एक विमान हवा
में उड़ान भरते हुए आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचय अब बारी है। Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. बीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीत तेजावन के नेतृत्व में साथ में ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप Captain transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Samit Tejawan, mentioned in dispatches. Sukhois flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayu Sena Medal, and Wing Commander Sudeep B. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations in the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environments and thus a valuable asset for close air support, precision strike and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha, and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते। आदर्श वाक्य फॉर्मेशन का नाम अमृत काल। भारत का विजन 2047 And flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvels the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our sky sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन कर। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन। 6 Rafale omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athray, and Squadron Leader Simangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrills to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचय। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हैं। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a Trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा विजय फॉर्मेशन। एक राफेल
900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए। And in command of Group Captain of the ship Karachi, along with Flight Lieutenant. So now, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today.